अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं ये कुछ अपनी डेली रूटीन और डेली हैबिट्स ऐसे वाली शेयर करूँगी जिनको फॉलो करके आप अपनी जो डेली रूटीन है उसको ईज़ी बना सकते हैं। आज का व्लॉग ना सिर्फ जो है वो हम जैसी हाउस वाइफ्स के लिए बल्कि उन बच्चियों के लिए भी है जो कि अभी अनमैरिड हैं और पढ़ रही हैं, और जो मैरिड हैं उनके लिए भी अपनी डेली की सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पर आप सबके साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं भी एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूं, लेकिन जो भी मैं अपनी डेली के रूटीन जैसे भी मैं करती हूँ, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शायद इससे भी किसी को कोई फ़ायदा हो जाए देखकर, और इस वीडियो को देखकर आपको मोटिवेशन मिले। पर अपनी डेली की रूटीन शेयर करने से पहले मेरा ये ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये मिक्स वेजिटेबल ऑमलेट है चीज़ के साथ, साथ में मल्टीग्रेन ब्रेड है। तो आज मैं इसके साथ ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ हम जहाँ से उठाते हैं वहीं पर हम वापस रखें। जब हर चीज़ को उसकी जगह पर वापस रखेंगे तो किचन जो है बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं लगेगा आपको। और इसी तरह से आज मुझे ये ग्रीन चटनी भी बनानी थी। तो आप जो भी आपने किचन में कुकिंग से रिलेटेड भी जो काम करने हो तो आप रात में ही जो है वो अपने जहन में सोच लें, ताकि नेक्स्ट डे आपका किचन में टाइम भी कम लगे और आपको बहुत ज़्यादा थकावट भी ना हो और परेशानी भी ना हो। और ये ब्लैक पेपर पाउडर फिनिश हो गया था, तो मैंने कहा चलो पहले इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने ग्रीन चटनी में भी डालना था। फिर इसमें मैंने ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा पानी डालकर तो मैंने इस ग्रीन चटनी को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अगर इस टाइम पर पानी आपको कम लगे और ब्लेंड ना हो रहा हो तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी और भी डालकर तो अंदर से मिक्स करके फिर ब्लेंड करें, तो ये फिर अच्छे से चटनी ब्लेंड हो जाएगी। ये देखें ये रेडी हो गई है। बस अब इसे फ्रीज़ कर दूंगी तो ये 2-3 हफ्ते के लिए चल जाएगी और मेरे लिए इजी हो जाएगा। और आगे अब इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 बेस्ट डेली क्लीनिंग हैबिट्स शेयर कर रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Number 1 is sweep the floor daily. Sweeping the house every day removes dust, hair, and other debris from the floor. This is especially important if you have pets at home. Number 2 is make your bed in the morning. As soon as you wake up, the first thing you should do is make your bed. This habit sets a positive tone for the day and keeps your room tidy. When you follow these routines and tasks, your kids will be inspired themselves and follow as well. Number 3 is clean the bathroom daily. Cleaning the bathroom floor, sink, and toilet every day is essential for preventing germs and maintaining hygiene. Now I am refilling the bottles soap liquid for hand washing.
Number 4 is wash dishes immediately. Washing dishes right after eating not only keeps the kitchen clean but also prevents bad smells and pests. And number 5 is take out the trash on time. Taking out the trash daily prevents odors and keeps insects and pests away. And kitchen trash especially should be taken out every day. And number 6 is put everything back in its place. Return items to their proper place after use. This habit reduces clutter and helps maintain order. Number 7 is fold or wash clothes daily. Putting used clothes in the laundry basket or washing a small load daily prevents clothes from piling up. Number 8 is clean windows and doors daily. Dust easily collects on windows and doors. Wipe them daily with a cloth to keep your home looking fresh. And number 9 is use air fresheners or natural scents daily. After cleaning, using an air freshener or natural scent makes your home feel more pleasant and welcoming. And last but not least, number 10 is making a daily cleaning schedule. Create a checklist or timetable for which part of the house to clean each day. This saves time and helps you stay organized.